गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real accounts, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. जिस बुक में ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we got to give the heading, journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of, suppose that be January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger folio. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will
record the entries, okay, without the columns. You got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scale and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger for you, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in the particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? Goods purchase किया 5,000 का कैश में. Salary पे की 4,000 की कैश में. Furniture purchase किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, you can see पहले की एंट्री आएगी purchase account debit to cash 5,000. Then मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दिया अगर परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ना ऐसे लिखना कंपल्सरी है, पता है कैसे लिखना होता है? एक्सक्यूज मी. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेज किया था. फर्नीचर कब से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश, सॉरी, सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसे कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchase, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so we'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you have to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, so individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we have to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy
which you have to learn it very properly. ये आएगा तो आपका अकाउंट्स और इजी हो जाएगा. Not only I am talking about 11th standard, I am talking about accountancy. For the entire life of accountancy, you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy, you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given, what the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और based on that फिर इसकी entry pass करें. Okay. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe and keep learning. Continue watching the video till the end. Thanks again. Illustration number 14. In the previous illustrations we have seen about the GST calculated on the purchase and sale of goods, or even we can see during the time of purchase return or sales return of the goods. Now we will see about the how GST is calculated on services. Okay, income expenses we can see now. Illustration number 14. From the following services related transactions, pass necessary journal entries in the books of Shreyas Trading of Ahmedabad. Applicable GST to Shreyas Trading are CGST at 20.5%, SGST at 2.5%, IGST at 5%. GST is not included for the following transactions. Add applicable GST and pass necessary journal entries 2019 Jan date 1. Transportation expense paid by check rupees 1800. So transportation expense account debit 1800. ओके, ये हमने कुछ कहा क्लियरेंस नहीं है कि कहाँ से क्या है, तो हम सीधा CGST और SGST लगा देंगे. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800, इनपुट CGST इसका 2.5%, ओके दैट इज़ 45. इनपुट SGST इसका 2.5%, दैट इज़ 45. टू बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट 1890. Courier expense paid by checks. The courier expense account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account. I hope so amount आपको easily निकालना आ जाएगा. Okay, then next advertisement expense paid by insurance premium paid by check rupees 4000. Insurance premium account debit, input CGST, input IGST to bank account. चेक कर लेते हैं. ओके, अमाउंट आपको ऑलरेडी निकालना आता है. 2.5% ऑफ 4000, दैट इज 100. देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक रुपीज 6000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड बाय चेक रुपीज 5000. अब यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा फिर और शायद क्रेडिट में आ जाएगा. सी देख लो, टू रेंट रिसीव्ड 5000, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST और बैंक अकाउंट डेबिट मुझे मिला है. तो पहले क्या करना है, पहले एंट्री लिख देनी है समझ के. बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड होता ही है, रिसीव्ड के टाइम पे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST. ओके, एंट्री लिख दो, फिर अमाउंट फाइंड करो. एट द एंड बैंक के सामने आप उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दो, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड पेड बाय चेक रुपीज 8000 टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई. ओके, अब मुंबई वाला आ गया. हम लोग कौन सा वाला है भाई, हम लोग अहमदाबाद वाला. मुंबई वाला आ गया, मतलब IGST वाला आ गया. ओके, पेड किया मैंने यहाँ पे, तो मतलब डेबिट साइड पे कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 8000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 400. कैसे आया 400? 8000 का 5%. IGST एप्लीकेबल है, मुंबई से बिलोंग करता है, अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो IGST अवेलेबल है. टू बैंक अकाउंट 8400. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एसेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड GST. अब एसेट्स के साथ है तो एप्लीकेबल GST CGST 9%, SGST 9% and IGST 18%. ओके, GST is not included for the following transactions. Add applicable GST and pass necessary journal entries 2019 Jan 1. Furniture of rupees 20,000 purchased from Surti Furniture Mart of Surat and payment is made by check. So furniture account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account. Let me check. I hope so it is very much clear. 20,000 का 9% CGST, 9% SGST लगा के फिर टोटल अमाउंट का मैंने यहाँ पे चेक से पेमेंट यहाँ पे कर दिया.
कंप्यूटर ऑफ 30,000 परचेज फ्रॉम जेम्स कंप्यूटर ऑफ जामनगर, ये भी गुजरात के अंदर आता है, इसमें भी CGST SGST एप्लीकेबल। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट input CGST account debit, input SGST account debit to James computer. Let's check. Okay, 9% आपको करना ही है. Next, machine of 1 lakh purchase from Raj Machinery Store of Delhi and payment made by check. दिल्ली वाला आ गया, अदर स्टेट वाला आ गया, अब मुझे मतलब करना पड़ेगा IGST. तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख, IGST अकाउंट डेबिट 18,000 18% to bank account 1,18,000 as you can see. Number 4, air conditioners of rupees 3 lakh are purchased from business from Sajanand Enterprise of Ahmedabad and payment is made by check. AC हमने परचेस किया है कहाँ से, अहमदाबाद से ही परचेस किया है, तो मतलब CGST IGST CGST SGST. ओके, एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू CGST, इसका 9% 27,000, SGST 27,000 to bank account 3,54,000. Total, you already know how to find the total and everything. Okay. In the next lecture, we will be dealing with the joint transactions and GST. I request you people to kindly solve all the illustrations of GST related जो भी है वो सब. इनपुट आता है परचेज के टाइम पे, आउटपुट आता है सेल्स के टाइम पे, थोड़ा सा वो ध्यान रख के फिर आप सारे सम्स को यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करें. आई रिक्वेस्ट यू ऑल बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंटायर लाइफ ऑफ कॉमर्स. GST के बारे में समझना, कैसे हिसाब करना है, उसकी अमाउंट कहाँ से आती है, कितनी लिखनी है, कितने का बिल बनता है. तो दिस ऑल क्वेश्चंस विल बी इजीली सॉल्व इफ़ यू आर passing this particular journal entries and if you are practicing this particular topic of GST again and again. ठीक है, नहीं तो कल उठ के वापस से भूल जाओगे सर IGST क्या होता है. तो CGST SGST वो जो हम सेम स्टेट में करते हैं. IGST तब लगता है जब अदर स्टेट से डीलिंग यहाँ पे करता हूँ. IGST के पैसे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं. CGST SGST के पैसे यहाँ पे स्टेट को मिल जाते हैं अवेलेबल, दोनों मिलके बांटते हैं. आधा ये CGST रखता है, सेंट्रल रखता है, आधा मेरा स्टेट यहाँ पे रखता है, यूनिट एंट्रीज यहाँ पे रखता होगा. सो विद दिस आई कंक्लूड माई लेक्चर. आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स kindly solve all the illustrations which is given to you till now. Not only this topic of GST but पहले से ही illustration number 11 and number 12 तो आपको मैंने पहले ही बताया. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा ध्यान रख के आप सब यहाँ पे करना. थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग.